Hey Rankas, क्या हाल है भाई? Hello Sanatan. So people, just quickly gear up. Now we are doing the second session on this quadratic, all right? Into the series of Rankers batch, right? And I'm sure everyone who is preparing for Rankers batch, they are very well aligned with the idea of selection, a proper selection. Okay, all right. So you are going to optimize every activity that you're performing. Hello Medashri, good afternoon. Okay, so uh, I'll be taking up some concepts along with that, some questions, right? So question based upon the concepts that we are actually dealing with. Okay, so some basic concepts, something that you might be aware of, but the level of question will increase. Okay, and one or two questions I'll be taking up very easy also. So just to show you the variety of problem or your just to increase your exposure to the various kind of questions. Okay, all right. So let me quickly select my pen. All right, all set. Perfect. Okay, let's quickly begin with that. So the regular activity, right? So that you know the people who are here, right, for this channel, because if you want to get update for every session which is happening for anchors, or not just for anchors, in fact for every kind of batches like Excel and AIM, whatever that we are running, right? If you want to come on those platforms and learn, it's a good place, right? So just quickly subscribe as well as press the bell icon so that you are aware of every upcoming session as well, okay? So that you should not miss anything. Perfect. And this is examination for the kids whom you would like to refer, all right, for the JEE preparation or for the NEET preparation. Please feel free, just tell them to reach to this examination. Of course, the stakes are pretty high, and of course, the awards are also really recognized one. So NASA is a big deal. For sure, it's a big deal. Okay, all right. Uh, this is a difficult name. I think you should write hello, whatever that your name. Hello, Swastika. Good evening. Yeah, so what's your name, dude? It's like Ayla Mendes. It's a very difficult name. I'm sorry, my English is not that good, or maybe I'm not aware of that pronunciation of your name. Can you just make it easy for me if you have any other name? All right. So the people who have never been to our platform, okay, it's Almendex. Perfect. All right. Thank you, Almendex. Okay. Thank you for at least knowing me. That was a new name, and it's a pretty unique name. Pay regards to your parents from my side. It's a lovely name. Okay, so the people who are not onto the or who are not our enrolled students, you know that the drill, right? So you have access for 14 days. Once you download the app, you can access everything, every single thing. All right. So that's a good thing. Perfect. Now let me begin the session. We'll quickly start them. Okay, your name has no meaning. That's okay. It doesn't matter. But I'm sure there will be a lot of love when your parents must have named you this. Okay, and that's what matters, right? The meaning doesn't make any sense. All right. Okay. So nature of roots. When is final theorem session? No, today is quadratic. That's all I can tell you. I'm not going to tell you when is final theorem happening. So if you are here to learn for quadratic, okay, stay here. I'm sure you'll enjoy. चलो शुरू करते हैं. So as I said, we'll be talking about this quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. All the coefficient belongs to real number and coefficient of x square not equal to 0. Okay, now, so you know this drill, right? Whenever the discriminant is equal to 0, we say that my roots, both of them will become equal to minus b by 2a. Alright, so minus b by 2a is the value of the root which it actually becomes equal to. So roots alpha and beta are real and equal. And for that we say that discriminant is equal to 0. We're talking about nature of roots, so that's why I'm just dealing with a lot of categories here. Second one, when discriminant is less than 0, of course, when the discriminant is less than 0, the term inside the square root will become negative. So that inside square root negative will become what? An imaginary or a complex number. Right? Something, so complex number theory we'll discuss quite in detail afterward, but as of now we just focus upon this. So when capital D less than 0, we'll say that the both roots are imaginary. Needless to say, when we go for capital D greater than 0, my roots will become what? Okay, so in fact, particularly I'm speaking of, for D greater than 0, we know that we have real and distinct roots. Okay, for within that, if I deep down into this, hello Athar. Okay, so when discriminant is a perfect square, and if I even like write it very precisely, if D is a perfect square of a rational number, if I say that D is a perfect square of a rational number, then they say that roots alpha and beta are rational. See, put it up in this way. If I'll write this minus b plus under root of capital D upon 2a,
Now when discriminant is a perfect square of a rational number, so square root of a perfect square of a rational number is going to give me what? A rational value, right? B is also rational, right? So when B is rational and this root D is rational, A becomes rational, we say that my roots are going to, so rational plus rational gives you what? Rational, rational upon rational gives you what? Rational only, alright? Okay, so no, these are not conjugate because this is not for the case of irrational roots, okay? I'm talking about rational roots only. So the more specific condition would be that all the coefficient ABC belongs to rational numbers, ABC belongs to capital Q, and discriminant is a perfect square of a rational number. Is that sorted out? You get the rational plus rational upon rational. So rational plus rational, rational, rational upon rational also gives you rational. Sure? Of course, I'm taking care of the fact that the rational in the denominator is not equal to 0 for obvious reasons. Okay, alright. So, hello Prince, hello Shiv Shankar Kiyar, Pashla, whatever it is, if you are here to learn, learn very well, okay? Perfect. Let's go for the next one. So that was when the d greater than 0 and was a perfect square of a rational number and I got the roots as rational. Now when the discriminant is not a perfect square, see when the d is not a perfect square, the value for alpha which we write as minus b plus root d by 2a. So if d is not a perfect square, then root d will become what? Irrational. Right? Now my roots will become what? Alpha as minus b plus root d by 2a and alpha is equal to minus b minus root d by 2a. So the other root will also become irrational, not alpha, it's actually beta. And that's why we say that the roots occur in conjugate pair when the discriminant is not a perfect square of a rational number. Okay, ठीक है, इतना clear है भाई? चलिए, अब एक और specific condition पे आता हूँ. Condition ये बोलती है कि अगर मेरा coefficient of x square अगर 1 हो जाए, b और c precisely, in fact we put it up in this way to be a rational number भी है, पर आप integer लिखिए इसको. Okay, and delta is basically discriminant. We say that it's a perfect square of an integer. मैं बहुत specifically बात कर रहा हूँ. तो वो बोलता है कि roots integer होंगे. कैसे होंगे देखो. जब मैंने अल्फा लिखा तो मुझे मिला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a. यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी समझने में, थोड़ा ध्यान रखना कि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर का. सर आई एम इन क्लास 11 सो मैं यस ऑफ कोर्स अंशुमन डेफिनेटली तुम अटेंड कर सकते हो. क्वाड्रेटिक तो सबको ही पढ़ना होता है और भी तो हम बेसिक्स पे चल रहे हैं बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a. नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर एक परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर का, तो रूट डी भी कैसा होगा? इंटीजर होगा. होगा कि नहीं होगा? ओके, रूट डी एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर गिव्स यू व्हाट? Integer, or integer minus integer, even for that sake gives you what? Integer only. So numerator becomes an integer. Sure? And if a is an integer, then 2a will also become an integer. So what will happen? This will also become integer. Integer upon integer may or may not be an integer. Then how can you be so sure, sir, that it's gonna give me this? Let me tell you quickly a picture, okay? I hope everyone is able to read that text. I've written that this is the perfect square of an integer, alright? For that. Now, I'm taking up this some space here. So let's say if I have to prove that, or rather if I have to use this, that my roots are integer, in spite of the fact I have a equal to 1 and I'm taking b and c belongs to integer. So these are what my condition, a equal to 1 and I'm taking b and c, the other two coefficients belonging to integer. Alright, b and c to be integer only. So alpha becomes is equal to minus b plus minus, okay, minus b plus under root d by 2a. That's what I was talking about, right? So it turned out to be integer upon integer, but every integer upon integer case is not an integer. But in spite of this fact, I'm saying that roots are integer. Yes, roots are integer. So shall we like explain it a bit more, a little deep dive into that? Let's see. Whenever, now here is a catch here, right? This is what I want you to people to remember. Whenever a problem is to be solved, whenever a problem is to be solved in terms of integer or for integers, whatever you call it, in terms of integers or for integers, I'll say that for integer, to be solved for integers only, then we must think of even odd classification. Now this is a fun statement that I want all of you to copy and keep it as a pretty handy statement for you, so that whenever in the examination you are dealing with everywhere with integers only, you can quickly do with that. Okay, hello Dev. Okay, so now when I say that
whenever there is a problem that you're dealing in terms of integers, you just have to do that. You have to talk particularly in terms of integers, right? Sorry, that in terms of even and odd. Make two cases, even and odd. I'm not saying that every time it will be successful, but 99% cases it will work. Okay, all right. Now let's see. So I'm taking the case 1 when I'm taking b to be odd. Is that okay? Odd integer. Okay, this is the case when I'm choosing b to be odd integer. So let's say I've taken up b is an odd integer. Sure? Okay. So my b is odd. Fair enough. When b is odd, then minus b also be what? Odd. Okay. Now, understand, a equal to 1, so discriminant will become what? B square minus 4c. Okay, so b is odd, odd minus even. So, it's a perfect square. I know that it's a perfect square of an integer. But b square minus 4c, if b is odd, b square will become what? Odd only, odd minus 4c. Odd minus even gives you what? Odd only. So, this perfect square of this discriminant will also become what? Odd only. Rather, root d term will also become what? An odd integer only. Is that okay? So when I've taken up b to be integer, minus b will also become integer. And since I'm talking about b square minus 4c, b square is odd because I've taken b to be odd. 4c will become even. Odd minus even gives you what? Odd. So my discriminant is actually perfect square of an odd integer. In this case, where I'm choosing b to be odd integer. So what happened? I got b as odd, so minus b is also odd. So odd plus odd upon, see, a is equal to 1, so I'll be left with only 2. Now what do I got? I got odd plus odd. What is odd plus odd? Even. And what is even by 2? What is even by 2? Integer, and that's how we define it. Alright, sure? So odd plus odd gives you even. Even by 2 gives you what? Integer. Alright, even by 2 doesn't give you even always, alright? So this is a common confusion that people have it. So even by 2 doesn't give you even, right? It may or may not give you even, but even by 2 will surely give you an integer only. And that's why we say that my roots are going to be what? Integer itself. I hope this makes a lot of sense. A equal to 1. I've chosen A to be 1 only. And but in that case, if you're not really picking it up, I'm in college but now enjoying it. Okay, good. Okay, great. Mr. Gameplay and Roast. Alright. Let's go. I hope this is really fun and people are easily able to understand. What happened to my pen? Pen ko kya ho gaya bhai? Oh, mere pen change ho jao color yaar. Mera pen change. Alright, now it's working fine. Chalo, let's go. I hope this makes a lot of sense and we are able to sort it out. Chale aage? Bade? Pakka? Chalo. So now, this was the all deal that I was talking about. Make this as B, C belongs to integer only, not the rational numbers. I wanted to break. And keep delta is a perfect square of an integer. Delta stands for D only here. Okay? Alright, chalo, आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऐसा मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा भी होगा, तो मैं बेसिक भी लूँगा, मतलब easy, medium और hard तीनों उठाऊंगा. I'll be picking up all the 3 types of question. The first one is the very interesting problem. Okay, I'll be picking up all the easy, medium and hard. Let's take up the first question based upon only the nature of roots. Alright, so we got this px square plus q minus r times of x plus p minus q minus r equal to 0. This has unequal real roots. For every real value of r belongs to all real number. R can take only real values. Okay, so r can take up any real value, but it will take only real values only. Alright, and if this quadratic has real unequal roots, so capital D will become greater than 0. Of course, it will become. So let's do one thing. Let's start the calculation. So when I started this D greater than 0, my discriminant will become actually nothing but q minus r b square minus 4ac, that is 4p times of p minus q minus r greater than 0 for all r belongs to r. Okay, let's quickly open it up and simplify. So this will become q square plus r square minus 2qr minus 4p square plus 4pq plus 4pr greater than 0. Let's create a quadratic in R. Why? Because I have the information about R that R can take up only real values. So when R belongs to R, I'll say that quadratic in R. So this is what? I'll be recreating as a, or rather I'll be rewriting it as a quadratic in R. Okay. So I'm writing this as R square minus R times, in fact minus 2R times Q, okay, let me put it up, plus 2R times, I'll be writing this as nothing but 2P minus Q. Okay, and the constant term in that case, I'll be writing this as Q square minus 4P square plus 4PQ. Alright, this is clearly a quadratic in R. Now, think in this way, I have a quadratic in R, and I also know that R can take up only real values, which means that this quadratic
will surely have roots only as what? Real. Now think in this way. If I have a quadratic in R where R can take up only real values and this is always positive. So when does a quadratic is always positive? When its discriminant is what? Negative, right? So quadratic in R for which I'll be making my discriminant to be less than 0. I'm writing it as D prime so that you should not have any confusion. So let me rewrite the D dash thing, okay? The new discriminant. Should I use mechanical and negotiation or CSE in state government top engineering college? Picasso, it's a difficult thing because I need to clearly understand what your future preferences are and what your intention, what exactly is your liking and disliking, right? Or with which particular aspect you become more motivated, okay? So this is not the question that I'm dealing it as of now. See, folks, this is for the rankers folks. They let them learn it, okay? All right, Picasso, you can ask this question afterwards. Or maybe after this session is over, you put your question in the chat, I'll answer it over there. Okay, all right. So I got a quadratic in R. I know that R can take up all real values. So I want this quadratic to be always positive for all real values of R. Okay, that can happen only when the graph is completely above the x-axis. So d dash become less than 0, that is actually nothing but, so we get b square, that is 4 times of 2p minus q, the whole square minus 4ac, that is 4 times of q square minus 4p square plus 4pq less than 0. Okay, now we just have to quickly solve it further. So let's do that. 4 and 4 is gone. We're going to open it up. We got this as 4p square plus q square minus 4pq. Minus q square plus 4p square minus 4pq less than 0 plus q square minus q square is gone. I'm rewriting this quadratic. So in fact inequality, this will look to me as nothing but actually 8p square minus 8pq less than 0. If you take that 8p common, you'll be actually writing this as p into p minus q less than 0. Now see this. Two numbers, p and p minus q less than 0. Product of two numbers will be negative when one of them is positive. They are of opposite signs basically. So the case one will be, if I take p to be positive, then p minus q has to be less than 0, which implies p has to be less than q. So when p positive, then I'm getting p less than q. So basically I'm getting this case p, see what is happening. These two imply that p is positive. So basically q is greater than p is greater than 0. Alright, which one? D option is the correct one. Is that clear? Similarly, if I go for the case 2 now, in the pretty similar format, okay? So for the case 2, what I'm going to do, I'll be taking the opposite sign. So this time if I take p to be negative, then I'll be getting actually q less than p. So what is my conclusion? I'll be getting q less than p less than q. 0 is basically C option as the correct answer. I hope this makes a lot of sense for all of you to understand it properly. Alright, done? Okay. The clarity is absolutely crystal clear. Perfect. Chale aage chale. Acha question. If I'll say in terms of a difficulty level, moderate. Done? Understood? Beautiful questions. So clearly C and D become the correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. फटाफट करना शुरू करो. If the roots of the quadratic equation are imaginary, okay, so roots are imaginary. So I'll be immediately writing the D less than 0. Okay. कलर चेंज कर देता हूँ. So जब मैंने d less than 0 किया, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरा बोल रहा है कि then this expression is less than pq greater than pq. तो मुझे इस क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन के ऊपर कमेंट करना होगा. बेसिकली उसकी रेंज की बात कर रहा है. तो पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. देखो यहाँ 3q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 3qx भी दिख रहा है, इनफैक्ट 6qx, r एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ r स्क्वायर दिख रहा है. मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चांसेस बहुत हैं. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ. सो आई विल बी राइटिंग दिस एज 3q स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6qrx. मैंने एक r स्क्वायर को ऐड किया और एक r स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो प्लस वाला r स्क्वायर था वो बन गया 3r स्क्वायर. ठीक है, ओके. सर वाई डी डैश वॉज लेस देन 0, इसलिए था बेटा क्योंकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक थी. आपने देखा था थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक डील कर रहे थे r स्क्वायर में, राइट, रादर r में बेसिकली. सो आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इन r विच वॉज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अब एक ऐसी ओपनिंग अपवर्ड्स क्वाड्रेटिक जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो उसका ग्राफ तो यही होगा ना बेटा. और अगर क्वाड्रेटिक हमेशा अबव द एक्स एक्सिस या अबव द एक्सिस रहता है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ही नेगेटिव होगा ना. ठीक है, मेरा क्लियर है बेटा ये थॉट? पक्का? चलिए, ओके, ऑलराइट. सो मैंने इस एक्सप्रेशन को भी, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन को क्रिएट कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को उठाया मैंने, उसको मैं रीराइट करने की कोशिश कर रहा हूँ. So this looks to me, if you take 3 common from the first 3 terms, you'll be dealing with actually qx minus r the whole square minus of r square. Is that okay? Sure? मैंने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया बेटा और कुछ भी नहीं किया है. मैं 3 कॉमन लोगे, अपने आप वो qx minus r स्क्वायर का
क्यूएक्स माइनस आर दी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, अब अगर मैं कैलकुलेशन के टर्म्स में बात करूं, क्योंकि इसकी रेंज की टर्म्स में बात करनी है, तो ये आ गया मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर। रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ये बोलते हैं ना कि किसी भी रियल नंबर का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज द रियल नंबर इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ही चीजें हो सकती है ना बेटा। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो भी स्क्वायर आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हुआ तब भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू में आप आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरी चीज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक है ये हमेशा माइनस आर स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक बात है। पर मेरे ऑप्शन की अगर आप बात करो तो देखो ऑप्शन क्या दिख रहे थे, ऑप्शन में 4pq जैसा टर्म दिख रहा है, तो मुझे ना चेक करना पड़ेगा। और देखो क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। वो क्या बोलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इमेजिनरी है। अगर ये क्वाड्रेटिक मेरा उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा होगा, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया इसका, आर स्क्वायर माइनस 4pq लेस देन 0, विच इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज लेस देन 4pq। सिर्फ आर स्क्वायर इज लेस देन 4pq, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है, यहां से अगर मैं इस थॉट को नाम देता हूं तो हम ये बोलते हैं कि कैपिटल डी लेस देन 0, बेसिकली आर स्क्वायर इज लेस देन 4pq, मतलब माइनस आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन माइनस 4pq। अब ये जो क्वाड्रेटिक का मेरा एक्सप्रेशन था जो कि माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर था, वो अब किससे बड़ा हो जाएगा, माइनस 4pq से। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय ऑप्शन वाज, ग्रेटर देन माइनस 4pq। Are you getting that? A very very simple question, very simple question। सिर्फ डेटा को एडजस्ट करके मैंने आंसर निकाला है, सिर्फ डेटा को एडजस्ट करके। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज की टर्म से बात कर रहा है। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना, रेंज में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर बन पाए तो, नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो फिर आप फिर सिंपल फॉर्मूले होते हैं रेंज के जो हमने क्वाड्रेटिक में आप काफी डिटेल में आपने पढ़ रखे हैं, उनको रिवाइज करिए अपने नोट से और फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रैंकर्स बैच है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सब चीज़ें एक एक बार पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हमारा कंटेंट वगैरह सब पूरा फ्लो होगा, सब नोट्स में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा, पर मैं अभी उससे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इस रैंकर्स बैच की स्टार्टिंग में मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ाया है, पर वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर का सहारा लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोलते हैं सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच दिस हैज नो रियल रूट्स। अगेन एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं होते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या करना होगा, लेस देन 0, उठाओ खड़ाखट और डी लेस देन 0 करना शुरू करो। तो मैंने जब एलसीएम लिया, इनफैक्ट सोल्यूशन वाले पार्ट पे रहते हैं भाई, तो मैंने जब एलसीएम लिया वी गॉट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1 divided by x square minus of 3x plus 2 is equal to 2 by t. Let's quickly cross multiply and just rearrange the data. So numerator will become 2x minus 4 minus x plus 1, that is actually x minus 3. Alright, तो यहाँ से आ गया x minus 3, perfect. So numerator becomes t times of x minus 3 is equal to 2 times of x square minus 3x plus 2. What are you waiting for? Simplify करो, पूरे x में proper quadratic generate करो। क्यों? क्योंकि उसके रूट कैसे होने हैं, इमेजिनरी। तो यहाँ से मुझे मिल गया 2x स्क्वायर, दिस इज लाइक माइनस 6x एंड प्लस tx, so we'll be writing this as nothing but ये उधर आ जाएगा मेरा इस जगह पे -4, परफेक्ट। तो यहाँ से ये जब आप इसको इधर माइनस 6x को इधर लेके आओगे तो प्लस x टाइम्स ऑफ 6 प्लस t, और कांस्टेंट के टर्म में हमारे पास में एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। मैं एक्चुअली इधर ही रख रहा हूँ, इधर नहीं रखूँगा इसको। सो 2x स्क्वायर, यहाँ मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस साइन या माइनस x कॉमन लूँगा तो इट विल बी गेटिंग दिस एज 6 plus t, perfect. Constant में it will be 4 minus 3t, 4 plus 3t actually, not minus 3t, my bad. Okay, this is what the quadratic. So 2x square minus 6x plus 4 on the right side. When you arrange it, so 2x square minus x times of 6 plus t, and then this 3t will go on that side, so it will become actually 4 plus 3t. अब इस quadratic के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, तो आप क्या करोगे, कैपिटल D लेस देन 0। तो कैपिटल D लेस देन 0 करोगे, you will be getting this as nothing but 6 plus t b square minus 4ac, that is actually 8 times of 4 plus 3t less than 0। फटाफट करते हैं भाई जनरेट करके, क्योंकि मुझे t की परमिसिबल वैल्यूज पे कमेंट करना है। तो मुझे मिलेगा यहाँ से t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 36 माइनस 32 माइनस 24t लेस देन 0, दैट्स गोना मेक माय क्वाड्रेटिक एज t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 लेस देन 0। सिंपल इनइक्वालिटी बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। हेलो नीलेश, गुड आफ्टरनून। तो मैं जब सॉल्व करूंगा इसको पूरा इनफैक्ट, तो आप देखोगे तो 6 प्लस माइनस 4 रूट के हिसाब से चीज़ें वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनइक्वालिटी वगैरह जनरेट कर लेना, मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप नेक्स्ट में करोगे तो ये 6 माइनस 4 रूट और 6 प्लस 4 रूट है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स यही आएंगे।
तो जब आप वेव जनरेट करोगे तो प्लस माइनस प्लस में नेगेटिव जोन आपका ये वाला होगा, तो मैं बोल सकता हूँ दैट t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 6 माइनस 4√2 से 6 प्लस 4√2, ठीक है, और t नॉन जीरो है, ठीक है। अब 6 माइनस 4√2, हाँ परसों रिजल्ट अच्छी बात है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे चिल रहो, आराम से सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और बाकी और जो बच्चे हैं उनको सीखने दो, उनकी मदद कर सकते हो तो उनकी मदद करो, तो तुम्हारे फ्यूचर वो सब जूनियर्स बनेंगे, ठीक है। तो जो अपना तुम इन्फॉर्मेशन या जो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो बिल्कुल करो। तो t आपका 6 माइनस 4√2, √2 कितना 1.414, लेट्स से 1.4 अप्रॉक्सीमेटली, सो 4 इंटू 1.4 5.6, 6 माइनस 5.6 0.4, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ये वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, और ये वैल्यू 6 प्लस 5.6 11.6, यानी हम बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0.6 से अप्रॉक्सीमेटली 11.6 तक। उसके बीच में कितने इंटीजर मिलेंगे मुझे? तो मैं अगर ये बात करूं कि t अगर यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस बात को अपनी रखने के लिए कि t का वैल्यू आपका 1 से शुरू होगा इंटीजर्स के टर्म्स में, क्योंकि 0.6 से अप्रॉक्सीमेटली शुरू हो रहा है और 11.6 से अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो रहा है, तो 1 2 3 सो ऑन टिल 11। मुझे इन सब का सम चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज व्हाट, n इंटू n प्लस 1/2, व्हाट इज n हियर 11। तो इन सब का सम क्या होगा, सिग्मा t विल बिकम एक्चुअली 11 इंटू 11 प्लस 1/2, 2 6 are 12, we get 66. Perfect, and this is what going to be my correct answer. All right, sorted out, sure, perfect. चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कॉमन रूट वाले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप बड़ी इजीली स्मूथ मूव करेगा। दो क्वाड्रेटिक हैं अलग अलग, a1 स्क्वायर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, और a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक बात है। दोनों में एक कॉमन रूट ले लेते हैं अल्फा, तो वहां से आप पहला रिलेशन का सेटिस्फाई करोगे, यू विल गेट दिस एज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा मिलेगा आपको a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस प्रोसेस को मतलब ये सब नहीं पढ़ा होता है भाई, है ना, जो बच्चे 10th में भी 11th में भी होंगे उन्होंने भी ये पढ़ रखा होगा। एक बच्चा अभी कह भी रहा था, ओके, गुड आर्ट सर, ओके, मे बी दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर आफ्टरनून, इफ इट इज Aishwarya then good afternoon. All right. Okay, so if we quickly take that cross multiplication method, we'll be writing this as b1 b2 c1 c2 a1 a2 and b1 b2. Let's quickly cross multiply. Perfect. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, सिंप्लीफाई करिए, आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बन के आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड अल्फा विल टर्न आउट टू बी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है विच आई रियली वांट टू टेक। सो मुदिगोंडा वेंकट, यस, डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज टेल मी क्विकली, शेयर करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। So when you eliminate alpha, this is what the relation that you get always, and I want you to use it directly in the examination hall. पर कई बार मैं ये भी बोलूँगा कि it's advisable that you take up the calculation quickly. वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि B1 C1 की वैल्यू पिक करोगे, पुट करोगे, उसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो instead of you go for these two equations, create them, जो भी आपकी corresponding equations होंगी, create them in that scenario and then create it. ओके, उसको यूज करो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना अच्छी बात है, अगर आप फटाफट कंपेयर करके लिख सकते हो तो इट्स अ गुड थिंग, कर लो। ओके, मणिगोंडा वेंकट, वेयर आर यू, डू यू हैव एनी डाउट और नॉट? ओके, एनीवेज, सो दिस वाज द कंडीशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब वो ये बोलता है कि अगर दोनों रूट कंडीशन हो गए, दोनों रूट कॉमन हो गए, तो वो ये बोलता है क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव both roots in common, then we say that the ratio of their coefficients are always equal. ठीक है, रेशियो की बात करते हैं हम लोग। विदाउट फॉर्मूला ओनली वी कैन फाइंड आउट, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, मे बी इट वो टाइम लैग का थोड़ा रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने आप और क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग इट। वेंकट, लेट्स क्विकली डू दैट। ओके, the quadratic equation p square minus 6p plus a equal to 0, p square minus 6cp plus 6 equal to 0 have one root in common. The other roots of the first and the second equation are integers in the ratio 4:3. Lovely. Which means they have one root in common. I can say that one root is alpha and alpha. This is the common root. The other two roots are in ratio 4 and 3. So I can assume that the second equation has root as 4 beta, the first equation has other root as 4 beta, the second equation has other root as 3 beta. Is that okay? Is that alright? Okay, let me take up this calculation onto the next page. शुरू करते हैं भाई। तो I got this quadratic p square minus 6p plus a equal to 0, and if I say that the roots are my alpha and 4 beta, so I'll say that from the sum of roots alpha plus 4 beta will become equal to 6, and product of roots I'll be saying that 4 alpha beta will become equal to a.
Fair enough. Let's talk about the second quadratic. So when I'll be talking about the second quadratic, p square minus cp plus 6 equal to 0, I'll say that my roots will be alpha and 3 beta. So sum of the roots alpha plus 3 beta will become equal to c, and the product of roots, which is 3 alpha beta, will become is equal to 6. Now use these two equations, just use these two equations, the product of roots. So one of them is 4 alpha beta, divide them, divide these two equations, LHS by LHS, RHS by RHS. So we get 4 alpha beta by 3 alpha beta equal to a by 6. So this alpha beta gone, you simplify this 2, we got a equal to 8. Wow, lovely. I got the precise value for 8. See, I haven't used the formula here. Venkat, I hope I've cleared the point, right? Okay, so I'm incoherent with you. Now when I get a equal to 8, अब इस a equal to 8 को आप इस equation में use कर लो. So the first equation got modified as p square minus 6p plus 8 equal to 0. That's going to give me the roots as what? 2 and 4. So alpha can either be 2 or it can be 4. Let's quickly pick it up for alpha equal to 4. So if I say that if alpha equal to 2, let's say if I choose for alpha equal to 2, I'll say that 4 alpha beta equal to a, right? Or 3 alpha beta equal to 6. So when alpha equal to 2, we'll say that 6 beta will become equal to 6, or I'll say that beta equal to 1. I want the other roots to be what? Integers only. So beta equal to 1, alpha equal to 2. Perfect. Satisfied. So alpha equal to 2 is definitely an acceptable answer. इतना समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया. अब अगर मैं मान लो अल्फा को अगर 4 ले लेता हूं, जब मैं अल्फा को 4 ले लेता हूं, so we'll say that 3 into 4 into beta is equal to 6. The problem will be, from here I'll be getting my beta value is equal to what? Half. They said that the roots have to be what? Integers. Is beta belongs to half is an integer? No, it does not belong to an integer, so I'm not going to accept it. So what am I answered? Alpha equal to 2 and beta equal to 1. So what exactly is the common root? Only 2. Only 2 here. Okay, don't take the option 4. And that was the catch over here. That was the only catch. If you ignore this word integers, believe me, it's going to trouble you like anything. Because it's a very simple question. And that's why it's a moderate question. If I put it up in that way, it's a moderate question. Okay, and if I'll say that more than one correct answer, people will be taking 4 and 2 both, and they'll move quickly from there. But you have to be really conscious about it, because they want the other roots to be what? Integers only. That is happening only when my common root is what? 2, not 4. Because with 4, the other root I'm getting it as half. Okay, it is useful or JEE or boards. Oh yeah, it's useful for everything, dude. It's useful for everything. Perfect. Let me take up the next question on this. Common root condition only. Okay. Consider two quadratic expressions. So I got two quadratic expressions, which are ux and vx. Okay. Such that their discriminants are equal. Okay. The discriminants are equal. So d1 equal to d2. Perfect. If ux equal to vx also has a root x equal to alpha, so they have a common root alpha also. Then they are asking that alpha will be am of the roots of ux equal to 0 and vx equal to 0. Okay. Alpha will be am of the roots of ux equal to 0 or vx equal to 0. Okay. Alpha will be the arithmetic mean of the roots of ux equal to 0. So we have to check it out what exactly the expression for alpha looks like. Shuru karte hain bhai. So the first condition that they have given me, that their discriminants are equal. So when the discriminants are equal, for the first quadratic the discriminant is b square minus 4ac. For the second one it is actually p square minus 4aq. Right, let me rearrange the data. So I'll be writing this as b square minus p square is equal to, or in fact b square minus p square minus of 4a times c minus q. Okay, if I take this minus 4a common, this is what I'm getting it here. Okay, alright. So this is the relation that I have when I have equated the discriminant. Okay, you are looking so tired today. Yes, I am not well. Very, very. That was a pretty sharp observation, Jack Sparrow. That was a pretty sharp observation. I am not well. I just have to, so I didn't want to create any discontinuity for the sessions, particularly for Aakash batch, because you guys are already running out of time. And that is the reason why I have to make sure that you people are learning without fail. So just to keep up you in momentum, just to keep you in discipline, I'm here. Alright, okay, option one. But thank you for the advice, Jack Sparrow. Really. Okay, alright. So let's see. We were talking about that they have a common root as alpha. So the first one is a alpha square plus p alpha plus q equal to 0. That will become is equal to a alpha square plus b alpha plus c. So see, alpha is a common root, right? So it will satisfy both the equation. You can cancel this a alpha square. From here I'll say that alpha will become is equal to, if you quickly generate that, I can write that alpha is equal to q minus c upon, so I can write this as actually q minus c upon b minus p. Perfect.
Can I write it or not? And from here I can say that Q minus C can be written as alpha times of B minus P. Can I use this information here? Of course I can, and we should use that. Why? Because I'm just trying to create the value for alpha only, right? So I'm just trying to do some modifications here. So I'll say that B square minus P square, I think the color is not that visible. I should change it to this one. Yes. So I'll say that from that quadrat, when I equated both the discriminants, this condition here, B square minus P square minus 4A times C minus Q equal to 0. From this Q minus C, I can write this alpha times of B minus P. So I'll be writing this as B square minus P square plus 4A B minus P. Okay. So C minus Q can be written as minus times of alpha and all. So 4A alpha B minus P equal to 0. Clearly, B minus P will be coming common. I can easily cancel it out when I cancel it because B and P are not equal. Okay, they are all unequal values. Alright, it's clearly given to me. Can you see that information here? So when B not equal to P, it implies that B minus P cannot become equal to 0. So I can cancel this B minus P from both the terms. This term and this term. I'm changing the color. Okay. So perfect. So here I'll be left with B plus P. Here I'll be left with 4A alpha equal to 0. I'll get my value for alpha as nothing but minus of B plus P by 4A. Okay. Now let's see what exactly it's gonna be. So if I rewrite it, it will look to me as minus B by A plus of minus P by A by 4. What is minus B by A? Minus B by A is the sum of roots for this quadratic, which is actually alpha plus beta. Let's say the first two roots are alpha and beta. Okay, because they have one common root as alpha. Okay. And if I go for the other one, so from the second quadratic, minus P by A. So from this quadratic, I'll say that minus P by A is actually equal to alpha plus gamma. So I'll say that minus P by A is actually alpha plus gamma. What I'm getting here? I'm getting here actually nothing but as alpha plus beta plus alpha plus gamma by 4, which is nothing but the arithmetic mean of both the quadratic equation. Arithmetic mean of roots of both the quadratic equation. Hence option 1 is the correct answer. Good job, Venkat. A option is the correct one. Is that clear? Perfect. Sort it out? Sure? Okay. शुरू करें आगे भाई अगले क्वेश्चन पे जाएं. See, this is all about like when you have roots in common, and that's why I'm picking it up in that style only. Okay? चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं. आइडिया क्लियर हो गया ना वहां पर क्या किया था मैंने और किस तरीके के थॉट प्रोसेस से पूरी चीजों को इवॉल्व किया है. गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट इट वाज रियली नाइस वन. गुड जॉब वेंकट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम LMN belongs to real numbers, not all have same sign. Please understand this. Not all have same sign. Okay, because in a good question, every information matters. One of the roots of the equation, this is also a root of this equation. So the second equation has clearly known roots. Then they're asking for the value for m square plus n square by l square. Okay, let's quickly figure it out. The second quadratic, which says that actually x square plus 2x minus 8 equal to 0. If I go for the roots of this equation, what are the roots? So you can factorize this as nothing but simply what? X plus 4 into x minus 2. So my roots will become actually x equal to minus 4 and x equal to 2. Either of them. I don't know which one is the common root, so I have to check it out properly. And I'll be using this statement that they don't have all the same sign. Maybe that might help. Okay, so let's quickly see. If you rearrange this equation is actually L square x square minus 2mLx plus m square. The other one can be rearranged as m square x square minus 2mnx plus n square equal to 0. These are two perfect squares. Quickly create them. So we get this Lx minus m the whole square plus mx minus n the whole square equal to 0. And whenever the sum of two squares is equal to 0, that is possible only when both of them are each and individually equal to 0. Isn't it or not? See, both the squares are what? Greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. Right? Okay. So when the left hand side is always greater than or equal to 0, but I want the right side to be equal to 0. That can happen if and only if both of the perfect square are individually attaining the value only as 0. And from there I'll say that my common root alpha will become is equal to m by l. That will also can be written as nothing but n by m. But now my question says that, see this, they have like one root in common and I can't take element to be all same sign. Now take up the two cases. Alright, I'll show you the two cases. Case 1, case 2. Okay. So when I go for the case 1, if I'm choosing that, let's say L by M, the common root alpha to be what? Minus 4. So let's say alpha equal to minus 4.
case 1, let alpha equal to minus, when I take alpha to be minus 4, m by l equal to minus 4, which implies that m is equal to minus 4l. So of course, m and l will be of opposite signs, and I want them to be opposite signs, right? Okay, but they say that not all, so all of them cannot be positive. And similarly, if I go for n by m is equal to minus 4, then I'll also be writing that n is equal to minus 4m, that will become actually 16l. So basically, L and N will have same sign, but M will be of opposite sign. So all the three are not same sign. Fulfills my job, right? Here, if I choose at case 2, so let me show you that as well. So let's say if I take up case 2, dude. Okay, so case 2, I am choosing this alpha to be 2, the common root to be 2. Which means that my M by L is equal to N by M should become equal to 2, which implies that M will become equal to 2L and N will become is equal to 4L. This clearly tells that here L, M, N same sign. Yes or no? Which means this has to be rejected. So I'll be accepting only this, that value of M becomes minus 4L, value of N becomes 16L. Now let's go for the value for this expression. What were they asking for? They're asking for M square plus N square by L square. So M square plus N square by L square will become is equal to, M is minus 4L, so that is actually 16L square. Plus N is 16L, that is actually 256L square by L square. So 16 plus 256 give me what? 272. Perfect, that's it. That's what my answer is. And this is what I'm going to report it over here. Okay, hello Vansh. RDX Gaming, wow. UIT. Okay, so your name is RTX, you sound like a RDX, and then you are a gamer, and then that too also on YouTube. So that's what your ID. What a lovely ID. Fine. Anyways, the answer that we get it as 272. Alright, coming back to the work. Good afternoon. Anyways, Vansh, good afternoon. Next question. Two quadratic equation as 3x square plus 5x plus 4 equal to 0 and px square plus qx square plus r, they have one root as common. See, it's a pretty smart catch here. Can you see this quadratic here? Can you tell me what kind of roots this equation has? Question says that they have one root in common. But this quadratic clearly has a discriminant less than 0, which means it has imaginary roots. Right? So the first quadratic has imaginary roots, and I know that imaginary roots, they occur in conjugate pair only. So both the roots are imaginary and then they always occur in conjugate pair. But my question says that both the equation have one root in common. So let's say if I have root as alpha plus iota beta, then the common root here will also be what? Alpha plus iota beta. But imaginary roots always occur in conjugate pair if all the coefficients are real number. That's what is given to me. So the other root here also has to be what? Alpha minus iota beta. First equation was by default, it was there. The roots were what? Alpha plus iota beta, alpha minus iota beta. But if they have one root in common, then the other equation will also have one root as alpha plus iota beta. But if the second equation has one root as imaginary, the other root also has to be compulsorily imaginary, provided that all the coefficient p, q, r belongs to real numbers. So when all the coefficients are real number, imaginary roots will surely occur in conjugate pair. Hence, what is happening here? Eventually, both the roots are common. Right? So when I say that both roots are common, what do? We just equate the ratio. So we say that p by 3 is equal to q by 5 is equal to r by 4. This ratio is confirming. They're asking for the value of what? 10 by 7 into 3p plus q upon 5r. So basically, they are asking for the value for what? 10 by 7, 3 by 5 times of p by r. So p by r is going to give you what? P by r is going to give you nothing but 3 by 4. Okay, so 3 by 4. In fact, let me make it even easier. You assume this ratio to be some lambda. So p becomes equal to 3 lambda. So this is actually 9 lambda. Q becomes 5 lambda. So this is actually 5 lambda. Divide by 5 into 4 lambda. Lambda gone. Numerator becomes what? Calculation will look, it's a very simple one although. 10 by 7 into 9 plus 5, 14. 5 into 4 is 20. 7 to the 14. 10 and 2 will give you what? 20. So the ratio becomes what? 1. What does that mean? The value for this expression becomes what? 1. Done. A option has the correct answer. Hello Yash. Hello. Okay, मजा आ गया. अरे वाह, बहुत बढ़िया. बड़ी अच्छी बात है भाई. चलो, I hope people are picking up the values from this. Okay, people are, sir PQR की value कैसे आई? मेरे PQR की value नहीं आई बेटा. मैंने ratio common की है. जब दोनों quadratic के root common होते हैं, when both roots are common, है ना? तो हम क्या करते हैं? Ratio of coefficients are equal. तो इसका कोफिशिएंट क्या है? P. इसका कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का 3. तो P और 3 का रेशियो सेम होगा, वही होगा जो x के कोफिशिएंट होंगे
Q/5, वही कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो होगा R/4, बस उसी के रेशियो को मैंने कुछ लैम्डा मान लिया। तो जब P R/4 को लैम्डा मानोगे बेटा तो R को आप क्या लिख सकते हो, 4 लैम्डा। लैम्डा मैंने अपनी जेब से निकाला है पर वो गायब हो जाता है ना, आंसर में तो मुझे कांस्टेंट ही मिल रहा था। ठीक है, ये रेशियो वाले मेथड का बहुत सिंपल तरीका होता है, उसको आप के मेथड भी बोलते हैं ना, जहाँ पे आप कुछ रेशियो दिए होते हैं तो आप उनको के मान लेते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा है, आपको जो मन करिए, मैं लैम्डा मान लेता हूँ, मुझे वही ठीक लगता है। ठीक है, आई होप मूवी घर, नाम बदल यार, अच्छा पढ़ने लिखने वाला नाम रख। तो ये मूवी घर जी, जो भी आप हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं कुछ फटाफट कुछ कंडीशंस दिखाता हूं, उसकी बेसिस पे एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है बट तुम्हें बहुत क्विकली पिक करना है उसको। शुरू करते हैं, बड़े आगे, थोड़ा स्पीड रखना अपनी। ओके, मूवी का समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाम बदल ले बालक, यार अपना नाम बता दो मुझे, तो मुझे याद रहेगा। Now, I am talking about the roots under some particular conditions only. Listen to the condition very carefully. What is happening here? जब C 0 हो गया, मतलब C क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो वी गॉट एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा इज 0। अगर अल्फा और बीटा अगर 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0 व्हेन ईदर ऑफ देम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। मतलब एक रूट तो आपका तुरंत 0 हो गया, और सिंस आई नो दैट कि वन रूट इज 0, तो अदर रूट को अगर आप मान लो बीटा मान लोगे, तो सम ऑफ रूट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, सो द अदर रूट बीटा विल बिकम व्हाट, माइनस बी बाय ए। सो माय रूट्स आर व्हाट, 0 एंड माइनस बी बाय ए। अब इसको आज के बाद याद रखो। हेलो वीरेंद्र, अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है भाई तुम्हारा, खाम मूवी घर नाम रखे हुए हो। एनीवेज, जोक अपार्ट, Virendra, I hope you are very well able to understand this very clearly. Sure? Perfect. So, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 आया, यानी कि C का टर्म 0 है, मतलब एक रूट को तो 0 होना ही होना है, और बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट क्या बन जाएगा, माइनस बी बाय ए। सॉर्टेड आउट, श्योर। आज के बाद इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज करोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, रैंकर्स बैच में हो बेटा, ये दिखे ना कि C 0 है, तुरंत तुमको ये इन्फर करना होगा दैट 0 एंड माइनस बी बाय ए आर माई टू रूट्स। ठीक है, स्वास्तिका सर मैथ्स की क्लास वीक में 2 बार ही होगी बेटा। फ्रीक्वेंसी हम समय के हिसाब से थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि अभी जस्ट अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखा है, क्योंकि हमें आपके डीपीपी वर्कशीट और जो आपके ये टेस्ट वगैरह वो सब अरेंज करने, तो आपको डीपीपी भी देना है, आपको नोट्स भी देने हैं, तो हम उस प्रोसेस को पहले सेटल कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब चैनल दैट वी आर गोइंग विद द फुल फ्लेजेड प्रोग्राम, अ डेडिकेटेड हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। ठीक है, इस वजह से स्पीड शुरुआत में थोड़ी सी स्लो है, बाद में बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, पहला इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो पहला रूट हुआ 0, दूसरा हो गया माइनस बी बाय ए, जिसने बोला, जैसे ही बोला C इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन देखो क्या हो रही है, ध्यान देखना। ठीक है, और फटाफट इंटरप्रिटेशन आने, जो भी इंटरप्रिटेशन है तुरंत आने चाहिए। तो इन्फरेंसेस हैज टू बी वेरी क्विक एंड क्रिस्टल क्लियर। B इक्वल टू 0, अब देखो B इक्वल टू 0 तो मतलब क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से सुनो। मैं बोलता हूं कि सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, सही बात है, पर अगर B 0 हो गया तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि बीटा क्या बन गया, माइनस अल्फा। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या हो गया, अल्फा और माइनस अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यूज्ड टू बी C by A, बट हियर बीटा इज माइनस अल्फा, सो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू C by A, which implies अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C by A, which implies अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस C by A। यही तो कहानी बोल रहा है वो। अगर सम ऑफ रूट 0 है, या दूसरी भाषा में अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक में, इफ b is 0, व्हाट इज b, कोएफिशिएंट ऑफ x। किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोएफिशिएंट ऑफ x अगर आपका 0 है, मतलब रूट्स आपके ऑपोजिट साइंस के होंगे, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, अल्फा एंड माइनस अल्फा। और वैल्यू क्या होगी रूट्स की, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ C माइनस C बाय A। इज दैट सॉर्टेड, श्योर, क्लियर। ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल हैंडी रखोगे ना अपने पास सब लोग। ठीक है, जैसे ही B 0 दिखे किसी भी क्वाड्रेटिक में, इमेजिन करो ये क्वाड्रेटिक है, मान लो x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, लेट्स अज्यूम दैट, या 2x स्क्वायर माइनस 7 लिख लो। A 0 है नहीं, C 0 है नहीं, B 0 है यस। तो यहां से x स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने, x स्क्वायर को लिख दिया मैंने 7/2, x क्या हो गया मेरा, प्लस माइनस अंडर रूट 7/2, यही तो ना, माइनस C बाय A, खत्म। ठीक है, इलस्ट्रेशन उठाया था बस तुमको समझाने के लिए। आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर एवरीवन। ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि वही है, ऐसे में C नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स होगा बेटा। अगर आपको रियल रूट चाहिए तो C नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा तो इमेजिनरी रूट आ सकते हैं। मान लो ये हो गया था स्वास्तिका, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x स्क्वायर क्या लिखोगे तुम, x स्क्वायर लिख दोगे अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3/2, मतलब इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे रूट्स, बस इतना ही। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है बेटा। बस मुझे यही चाहिए कि तुमको चीजें बैठती जाए दिमाग में, और इन्फॉर्मेशन आज के बाद डायरेक्टली यूज करना दिमाग में, तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इन्फॉर्मेशन,
अब इस बार ए और सी बराबर करिए। सर क्या करते रहते हो, ए और सी बराबर कर दिया मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, सी बाय ए, दैट विल बिकम 1। अल्फा इंटू बीटा 1, दो नंबर का प्रोडक्ट का 1 होगा जब बीटा क्या हो जाए, पहले वाले का रेसिप्रोकल, मतलब रूट क्या हो गया, अल्फा एन 1 अपॉन अल्फा। यही तो कहानी बोल रहा है, खत्म हो गया एज इट इज। एकदम छोटू छोटू टाइप की कोई एकदम इन्फॉर्मेशन है, बट वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सर ये क्लास रेगुलर क्या, हाँ भाई बिल्कुल, हर सोमवार और शुक्रवार को मैं आपको हमेशा मिलूंगा सौरभ कुमार जी। एवरी मंडे एंड फ्राइडे वी आर मीटिंग फॉर श्योर। हर सोमवार और शुक्रवार को हम लोग हमेशा 2 बजे मिलेंगे मैथ्स की क्लास के लिए। पर इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री, आपके फिजिक्स के भी सेशन चल रहे हैं। फिजिक्स के सेशन नतीउल्ला सर और बिडाल सर ले रहे हैं, और केमिस्ट्री के सेशन शायद आपकी राखी मैम ले रही हैं, ठीक है। एज फार एज रैंकर्स बैच इज कंसर्न, इसके अलावा पैरेलली एक्सेल और एम के बैचेस भी चल रहे हैं। तो एम के बैच में आपका 11th का पोर्शन चल रहा है, एक्सेल के बैच में आपका 12th का पोर्शन चल रहा है, यहाँ रैंकर्स का पोर्शन चल रहा है। खड़ा पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, अगली इंफॉर्मेशन क्या बोलती है भाई, चलो शुरू करते हैं। अगला केस क्या होगा, इस बार बोल रहा है सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अरे बाप रे, ध्यान से देखो, मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, मैंने जो इसकी जस्ट नीचे लिखी है, मुझे फर्क बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इक्वेशंस। देखो ध्यान से बताओ क्या फर्क है, क्या फर्क है। सर सेकंड इक्वेशन में x है, फर्स्ट में x है ही नहीं। सही बात है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया गया होगा, अगर मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि आप सेकंड इक्वेशन में यू जस्ट पुट x इक्वल टू 1, कि सर आप x में सेकंड इक्वेशन में x को 1 पुट कर दो, जैसे आप x को 1 पुट करोगे आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और वो भी ट्रू है। मतलब अगर सेकंड इक्वेशन में x को 1 पुट करने पे a प्लस बी प्लस सी आता है, और वो भी अगर 0 हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया, मतलब x इक्वल टू 1 इज अ रूट। डन। क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक रूट मेरा 1 होगा ही होगा, है ना। अच्छा, अब जैसे ही मेरा एक रूट 1 हो गया तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय ए। पर अल्फा तो 1 बन गया, 1 कौन रूट हो गया ना, अल्फा 1 हो गया, तो दूसरा रूट बीटा क्या बन गया, c बाय, इसलिए मेरे रूट्स क्या बन गया, 1 और c बाय। खत्म। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सीधे यूज करना एग्जामिनेशन हॉल में आज के बाद, चाहे मेंस का एग्जाम हो चाहे एडवांस का एग्जाम हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्विक, ओके। यही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरी, रूट साइज 1 c बाय। और एक दिखा दूं, ऐसे बहुत सारे इन्फरेंसेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बड़ा ही। अच्छा अब इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। बताओ मुझे जल्दी, सेकंड इक्वेशन में क्या पुट करोगे जो पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी या पहली कंडीशन आ जाएगी, पुट x इक्वल टू -1। यस, स्मॉल थिंग्स मेक इंटेलिजेंट, या ऑफ कोर्स इट इज, ठीक है, परफेक्ट। तो जैसे ही -1 पुट किया आपने, मतलब अल्फा क्या बन गया, -1। जैसे ही अल्फा -1 बन गया मतलब दूसरा रूट बीटा क्या बन गया, -c बाय। क्यों, क्योंकि अल्फा -1 बना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c बाय ए। अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर दोगे, माइनस बीटा इक्वल टू c बाय ए, और बीटा इक्वल टू माइनस c बाय ए। तो मेरे रूट्स क्या हो गया, -1 और -c बाय ए। खत्म, डन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैंडी रख लोगे ना, शाबाश मेरा, शाबाश, ठीक है, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं आपको, फटाफट करिएगा। इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो इन्फॉर्मेशन सिखाई है मैंने उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, खटाखट सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत तेज रफ्तार रखना। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस mx प्लस 12 इक्वल टू 0, दे आर इन 2:3, ओके, 2 और 3 के रेशियो में है वो। तो मान लेते हैं इसके रूट क्या हो गए, 2 अल्फा और 3 अल्फा, ये मान सकते हैं ना। चलो आगे करते हैं, कैलकुलेशन पे पहुंचता हूं मैं सीधे। So I got the quadratic 5x square plus mx plus 12 equal to 0. The roots are 2:3, that is 2 alpha and 3 alpha. So sum of the roots, which is 2 alpha plus 3 alpha. So 2 alpha plus 3 alpha from the quadratic will become minus m by 5. And the product of roots, which is actually 2 alpha into 3 alpha, will become is equal to 12 by 5. दोनों इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दोनों कैलकुलेशन निकालोगे, फटाफट कैलकुलेट करो। 5 अल्फा बन के आ गया -m/20, सॉरी -m/5, मतलब अल्फा की वैल्यू बन के आ गई -m/25। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या आया था, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 by 5। 6 उड़ गया इधर से 2 से, यहां से अल्फा स्क्वायर कितना बचा, 2 by 5। अब क्या करोगे, m की जो निकालना है ना, पुट कर दो यहाँ पे, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इतना एकदम बहुत किड्जी कैलकुलेशन है ये, पर मेंस में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तुमको, डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से जैसे अल्फा को पुट करोगे, यू विल गेट दिस एज m स्क्वायर अपॉन 625 इज इक्वल टू 2 by 5। तो यहां से 5 कैंसिल करोगे, ये 125 आ जाएगा, ये उधर जाएगा, यू गेट m स्क्वायर इज इक्वल टू 250, राइट, विच इज एक्चुअली 25 इंटू 10, और सिंपली m इज इक्वल टू +-5√10। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन, ए ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। छुटकू क्वेश्चन,
सटासट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ इसी के बेसिस पे। श्योर, आई एम पिकिंग अप वन मोर ऑन दिस। ओके, जयवर्धन सिंह राठौर जी, आई एम बायजूस लेजेंड, आई हैव टू से दैट यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट बिलीव मी, ये थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द होल टीम। इट्स नॉट जस्ट मी हु इज वर्किंग, आई एम द फेस ऑफ दिस, बट एक बहुत सारी टीम है मैथ्स की टीचर्स की, मैथ्स के एक्सपर्ट्स की, जो मेरे साथ काम करते हैं और मुझे इस काबिल बनाते हैं कि मैं आप लोगों तक सब कुछ पहुंचा पाता हूँ, ठीक है। बट थैंक यू, आई विल डेफिनेटली टेक दिस कॉम्प्लीमेंट अहेड एंड पास इट ऑन टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन मजेदार तो लगते हैं भाई, बिल्कुल लगते हैं। चलो अगला, अगली वाला करो। ये तो एकदम छुटकू क्वेश्चन, एकदम बेबी क्वेश्चन, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा सेशन। मुझे बस फटाफट सॉल्व कर दो मेरे लिए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि एल एम एन बिलोंग्स टू आर एंड एल प्लस नहीं, आखिरी नहीं है, एक और क्वेश्चन लूंगा इसके बाद। एल एम एन बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एल प्लस 2m प्लस 4n। मैं 3 बजे तक मुझे खत्म करना, मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि उसके बाद तुम्हारा एक्सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्णा जी, कृष्णा हिंडोल, ओके हाय, बड़े खतरनाक फेसेस बना रहे हो कृष्णा, सब ठीक है ना तुम्हारे घर में? ओके, सो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को देखो, हो क्या रहा है, क्वाड्रेटिक ये दिख रही है, उसमें n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, तो n का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे n का कोफिशिएंट है 4। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा रीराइट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, L प्लस 2m प्लस 4n इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को थोड़ा रीराइट करता हूँ। पूरे इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो L बाई 4 प्लस m बाई 2 प्लस n इक्वल टू 0। मैंने कुछ और नया नहीं किया, मैंने सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिया है। अच्छा, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए लिखना है। तो मेरे पास बचा क्या, देखना ध्यान से सब लोग, ठीक है। मेरे पास आया L बाई 4 प्लस m बाई 2 प्लस n इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक क्या है, LX स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। बताओ मुझे फटाफट कंपेयर करके, x को क्या पुट किया हो गया, शाबाश स्वस्तिका, वेरी गुड बेटा। x इक्वल टू हाफ इज अ रूट, वेरी लवली वेरी लवली। जैसे x इक्वल टू हाफ इसका एक रूट हो गया, मतलब क्या बन के आ रहा है, देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आई गॉट वन रूट एज x इक्वल टू हाफ और वन रूट एज हाफ। हाफ कैसा है, वन पॉजिटिव रूट है, यस। क्या ये नॉन इंटीग्रल रूट है, यस। क्या बोथ इंटीग्रल रूट्स है, मुझे नहीं पता, इसके बाद तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। दूसरे रूट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे तो क्या होगा, n बाई एल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज एक्चुअली हाफ इंटू सम बीटा। तो बीटा कितना हो गया, 2n बाई एल। अब n और l के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि दूसरा रूट कैसा है, पर जो एक रूट है वो श्योरली पॉजिटिव है और वो इंटीग्रल है, तो इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। इर्रेशनल रूट मैं कमेंट नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है भाई दूसरा रूट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी मेरे दोनों करेक्ट आंसर्स हो गए। एकदम छोटू बेबी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड पीपल आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हियर। अच्छा, तो मैंने बोला था कि मैं इसके साथ ही खत्म करूंगा, क्योंकि सेशन में 3 o'clock से आपका एक्सेल का सीरीज शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जो लोग रिपीटर्स की तेज स्पीड या डेप्थ के साथ सीखना चाहते हैं, जो 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ करना चाहते हैं, जो 11th करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सारे सेशंस को क्लैश नहीं होने दिया है। बहुत सारे सेशंस हैं, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। रैंकर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं दोबारा फटाफट दूसरी रूट भी रियल होगी, दैट्स ऑल व्हाट वी नो। यस एग्जैक्टली स्वास्तिका, दैट्स व्हाट वी डू। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बता दो आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। सारा कुमारी, मुझे आपको बस यही बताना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन कर रहे थे जो हमने खत्म कर दिया है, विच इज नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स कंडीशन और कुछ इन्फरेंसेज जो हमने दिए थे। तो आप यूट्यूब पे थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे, और फटाफट आप सेशन को रिवाइज करो, आपको सब समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ इस बात की, ठीक है। बट अच्छे से रिवाइज करना बेटा, है ना, पूरे सेशन को देखना और फ्लो के साथ देखना, भागने मत लगना, ठीक है। तो एज आई सेड, आई विल बी साइनिंग ऑफ, यू कैन हेड टू द नेक्स्ट सेशन। और इस रैंकर्स बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा है हमेशा कि मैं आपको एक्सेल और जो तीनों सीरीज है कभी ओवरलैप नहीं होंगी, तो आप तीनों से सीखिए। एक्सेल में आके डेप्थ सीखिए, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन देखिए। 12th का पोर्शन पढ़ना है तो आप एक्सेल पे जाइए, जो एक्सेल 2023 वाला बैच है, और जो तीसरा सेशन है हमारा वो एम वाला, एम 2024 11th पढ़ना है तो उस पर जाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हाँ, आप जितने बजे भी क्लास में आप जाना चाहते हैं आप उसमें जाइए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेक श्योर दैट पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड। आपको नोट्स मिलेंगे इसके, आपको डीपी भी मिलेगी, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी मिलेगा। थोड़ा सा पहले से पढ़ करके आना। अगले सेशन में क्वाड्रेटिक ही चल रहा है अभी, तो अगले सेशन में मंडे को मुलाकात करेंगे हम लोग, फिर फ्राइडे को फिर करेंगे। तो इट्स अ रेगुलर क्लास, हर मंडे और फ्राइडे को मैं आपको मिलूंगा 2 बजे हमेशा, विदाउट फेल, ठीक है। चलो फटाफट enjoy, take a very good care of your health as well as help the needy ones every time you are capable of. Goodbye folks.